Assalamu alaikum, namaste, hi everyone. This is Learning 786. Today we are going to learn the poem from Vicharad Uttara, Adhunik Khande Kavya. Poem title is Prem Madhuri, written by the great poet Bharatendu Harishchandra. Prem Madhuri means love sweetness or amar lusciousness. Let us see the poet introduction and the summary. Before that, as usual, a small request. Whoever not subscribed my channel, please subscribe so that you never miss my updates and you will be the first viewer of my uploads. Click the like button, press the bell icon, share with your friends and relatives. Come on, let us see the poet introduction without wasting our time. It is a little lengthy. Let us see now. कवि परिचय और कविता का सारांश. पोएट इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द पोएम. आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम शीर्ष भाग में आदर के साथ लिया जाता है. इन द मॉडर्न पोएट्री द नेम ऑफ द ग्रेट पोएट भारत हरिश्चंद्र will be taken, his name will be taken with great reverence and respect in the top division. यद्यपि उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य सृजन किया, तथापि हिंदी गद्य साहित्य में वे अग्रणी माने जाते हैं. Even though he started his writings in Brajbhasha language, but he is known as the leader of Hindi literature. उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को एक संपन्न परिवार में हुआ. He was born in the year 1850, 9th September in the well-to-do family, royal family. उनकी जीवनावधि छोटी थी. His लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट. 35 वर्ष की आयु में क्षयग्रस्त होकर उन्होंने इस संसार से विदा लिया. इन द एज 35 years itself, he victimized by tuberculosis and left the world. See how pitiful thing is it. वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के पंडित थे. He is a scholar in हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. आजीवन उन्होंने समर्पण भाव से साहित्य की सेवा की. थ्रूआउट द लाइफ विथ फुल ऑफ डेडिकेशन ही डिड द सर्विस टू द लिटरेचर. हैज़ डन द सर्विस टू द लिटरेचर. भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य के अलावा अनेक साहित्यिक प्रक्रियाओं में अगली पीढ़ियों के मार्गदर्शक रहे. He is the pioneer to the young generations in different fields of Hindi literature, not only in poetry. Let us see now Kavya, long poems. His long poems: Ramleela, Vinay Prem, Pachasa, Vijay Pataka, Prem, Sarovar, Krishna Charitra Adi. These are all very famous long poems of him. निबंध ऐसे: स्वर्ग में विचार सभा, हम मूर्ति पूजक हैं आदि. देन दिस इज द ऐसे. नाउ कथा स्टोरी. हमीर हट, सुलोचना, शीलमती आदि. इतिहास हिस्ट्री: दिल्ली दरबार दर्पण, महाराष्ट्र देश का इतिहास. मौलिक नाटक, ओरिजिनल ड्रामास. वैदिकी हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली आदि. These are the very famous writings of the great poet Bharatendu Harishchandra. Let us see the rest of the introduction of the poet and the writer. भारतेंदु के संपूर्ण साहित्य को काशी नगरी प्रचारणी सभा ने ग्रंथमाला नाम से 2 भागों में प्रकाशित किया. His writings, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, published in 2 parts by the name ग्रंथमाला. In 2 parts his writings published in 2 parts by the काशी नगरी प्रचारिणी प्रचार सभा.
by the name ग्रंथमाला। संस्कृत तथा विदेशी शब्दों को हरिश्चंद्र ने तद्भव रूप में ग्रहण किया। Sanskrit language as well as the foreign words, Sanskrit words he used as it is, no change, has done no change in that. मुहावरों और कहावतों के कारण भाषा में निखार, सरलता और स्थानीयता के गुण पाए जाते हैं। Due to his proverbs and sayings, grandeur and novelty came the poetry and in his writings. उन्होंने अपने काव्यों में श्लेष, उपमा, चमक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का सफल प्रयोग किया। He used the alankars. I told you in the poetry, every poet will use the metaphors and similes. Here alankar. These are the श्लेष, उपमा, चमक, उत्प्रेक्षा, अलंकार used in his poetry. शब्द शक्तियों का उन्होंने बड़ी सहजता से अपनी कृतियों में प्रयोग किया। He used the words, beautiful words, the power of the words also he used in his writings. मुक्तकों की रचना हरिगीतिका, छपिया, कविता आदि छंदों में की गई। He has used the freestyle in the हरिगीतिका, छपिया and कविता also. काव्य में रस का प्रयोग मर्यादा की सीमा के अंदर है। He used the passions, love, anger, such passions he used in the limitations. In the limitations of the respect. हरिश्चंद्र की रचनाओं में मुख्य रूप से हम भाषा प्रेम, स्वदेश प्रेम और मानव प्रेम के सजीव चित्र देख सकते हैं। In his writings we find mostly love of language, patriotism and humanity. राष्ट्रीय जागरण के आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय पात्र का निर्वाह किया। Even in the national awakening movement he took the part. He participated. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। In the opinion of the great poet and writer Ramchandra Shukla ji, Bharatendu Harishchandra we find the mostly patriotism, deshbhakt. Patriotism is immensely we find in his writings. These are the words of the Ramchandra Shukla ji about the great poet Bharatendu Harishchandra and his writings. Now we are come to see the summary of the poem. Prem Madhuri. I told you the love sweetness or the amar lusciousness. कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम की सर्वोत्कृष्ट शक्ति का विवरण देते हैं। The best of the best love explained in this poem. गोपियाँ कृष्ण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रख सकते। In the separation of the Lord Krishna, his wives or his beloved lovers, suitors, cannot be peaceful for a moment. गोपियों कंसवध हेतु कृष्ण मथुरा चले गए। To kill his own maternal uncle, Lord Krishna is the 8th child of goddess Devaki. He slayed his own maternal uncle Kansa. For this reason only he went to the Madurai. Gopiyan unke to slay his maternal uncle he went to Madura. गोपियाँ उनके बिरहा में तड़प रहे हैं। In his separation they are languishing. कृष्ण उनकी वियोग व्यथा समझते थे।
Lord Krishna also could understand the feelings and sufferings of his beloved wives and his beloved lovers. इसलिए उन्होंने मित्र उद्धव को उन्हें ज्ञान का बोध करने के लिए गोकुल भेजा. So only he sent his friend Uddhav to give the spiritual knowledge to his wives and divert their attention from him. I mean, say from Lord Krishna. जब उद्धव गोपियों के मन में कृष्णा की जगह ब्रह्मा को स्थापित करने की मंत्रणा देते हैं, then his friend Uddhav tries to divert their attention towards the Lord God, ईश्वर. जब गोपियों उद्धव को भोलापन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि by the time they make the satire of his words and says, हे उद्धव, यदि हमारे अनेक मन होते तो हम एक श्याम सुंदर को देखें, एक योग में लगाते. If we have the two hearts, one we can dedicate to our beloved Lord Krishna, the other one is we can use for the spiritualism or the divinity. एक से घर का कामकाज करते. We can with the one heart we can do the household works. एक से ध्यान करते. In the other side we can do the meditation. और लोग लज्जा त्याग कर एक मन से श्याम के प्रेम में तल्लीन हो जाती थी. Leaving all the worldly reactions or the criticism, we will be immersed in the love of Lord Krishna. अब फिर आंखें मूंद कर कौन जप करके योग की साधना करनी चाहिए. Now who has to close our eyes and do the meditation or to gain the spiritualism. हम विवश हैं कि हमारा एक ही मन है. We are helpless because we have only one heart. और इसमें करोड़ों कामदों को भी मोहित करने वाले मनमोहन कृष्ण के प्रेम का आनंद समाया हुआ है. We have only one heart. In one heart we have the elation or the delightfulness of our great Lord, who can attract the thousands crores of the cubits. That means our Lord Krishna is equivalent to not equivalent, is more best from, he is the best, he is the greatest one among all the cubits. एक ही मन था, इसलिए कृष्ण को चुरा ले गए. We had the only one heart that is stolen by our Lord Krishna. हरिश्चंद्र के माध्यम गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग सिखाने के लिए तुम कौन हो. To teach the spiritualism or the divinity, who are you? These are the questions asked the beloved wives of the Krishna to his friend Uddhav, to the friend of Lord Uddhav. और यहाँ आकर हमें बोध करते हो. You came here to teach the spiritualism or the divinity. Who are you to do all these things? Now we are coming to see the दूसरे पद. दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जानते हैं कि ब्रह्म सब स्थलों पर विद्यमान होता है. We knew the God is everywhere. He is omnipresent. We knew. किंतु हमारा मन नंदलाल कृष्ण के बिना विहल्व है. We knew the God is everywhere, but our heart is lacking for the Lord Krishna, our beloved one. अब इसमें कोई ज्ञान बैठ नहीं सकता. In this agitated, frustrated love, we can't gain the spiritualism or the divinity. हे बुद्धो, तुम जाकर
उनसे कृष्ण से इतना बता दो कि गोपियाँ कृष्ण के सिवा और कुछ जानना ही नहीं चाहती. You just go and inform to the Lord Krishna, without you we know not anything more. We don't want to know anything more than you. Just go and tell your friend Lord Krishna. प्रिय, आपके दर्शन के बिना हमारी आंखें दुखी और तुम्हारी मिन्नतें नहीं मानती. Our eyes are lacking for gloating for you. We will not listen any more words of you or your pleadings or anything. Just go and tell these words to your friend Lord Krishna. These are the words told by wives of the Lord Krishna to his to Krishna's friend Buddha. Now we are coming to the third stanza. तीसरे पद में हरिश्चंद्र गोपियों का अटूट प्रेम का वर्णन करते हैं. In this third stanza, poet Harishchandra expressed the immense love of the गोपियाँ, his wives, Krishna's wives. गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि हे बुद्धो, क्या एक म्यान में दो तलवारें टिक सकती हैं? Is it possible in the two knives can be in one case? हमारे नेत्रों में हरि के प्रति जो रस भाव छाया हुआ है, क्या वहाँ और कोई रस के लिए स्थान होता है? In our heart and mind and body, we have the passion of our Lord Krishna. In this condition, is there any possibility to get any other passion in our body, in our heart? जिस शरीर और मन में मोहन रम रहा है, वहाँ ज्ञान क्या आता है? In our body, mind, soul, everywhere is filled with our Lord Krishna, where there is a place to get the divinity or the spiritualism. तुम चाहे कैसे भी संदेश सुनाओ, उस पर हम विश्वास नहीं करते. Whatever the messages you tell, we will not believe in that. हम मूर्ख नहीं, we are not the fool. हमने अमृत का पान किया, we had the ambrosia. We consumed ambrosia. अब क्यों इंद्रारुण जैसी कड़वा लता का रस पे? Why should you have the bitter juice of the इंद्रारुण ट्री पर? हम ऐसे भूल कभी नहीं करते. सच्चे फुलिशनेस वी विल नॉट डू एनी लॉन्ग. हरिश्चंद्र के शब्दों में गोपियाँ बहती बताती हैं कि कदली वन को काट लो तो फिर हरा हो जाता है, किंतु हमारा मन कृष्ण के सिवा कैसे भी कठिन स्थिति में और किसी के लिए स्थान नहीं देता. Even the trees or the anything, if you cut again it can grow, it can become green, but our heart is not such. There is no chance at any condition, at any position, we will not give the place to anyone. योग और ज्ञान और निरर्थक उपदेश हमें मत दो. Don't give such a योग ज्ञान type of the lessons to us. योग means meditation, ज्ञान means knowledge. Don't give such things, don't teach such things to us. रहे क्यों एक म्यान ऐसी दे? We have read this one the same here. Two knives cannot be in one case. अमृत रवाई अब दही इनारून को मूर्ख जो भूले, हरिश्चंद्र वज्र जो कदली वन काटो तो फिर फूले. The same here. You don't know, once is the tree also cut, it can grow green, and we had the ambrosia, we can't take the bitter any juice, and two knives cannot be in one case. चौथे पद में इन द थर्ड स्टैंजा गोपियों बुद्धों से कहती हैं कि वृंदावन के मुनिगण पक्षियों का रूप लेकर सौंदर्य का अवतार श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नए कोपलों से भरे वृक्षों पर समूहिक बैठकर प्रतीक्षा करते थे. You might be knowing the saints are in the disguise of the birds sitting on the
tender branches of the tree and waiting for our Lord Krishna. You might be knowing like that they said. कोलाहल से बचने के लिए आंखें मूंद कर स्वामी का मुरली ज्ञान सुनते थे. To avoid the buzz of the people or the things, they used to close their eyes. The birds who are the saints who are in the disguise of the birds, they used to close their eyes and they listen the flute of the Lord Krishna. प्राणम प्रिया श्री कृष्ण के मुख से मधुर ज्ञान सुनते हमें ऐसा लगता था कि हम मानो अमृत का रस पीते थे. Whenever we heard the beautiful, melodious, mellifluous flute of our great Lord Krishna, we used to think that we had the love passion. Even the Amrit means ambrosia. They think it's just like ambrosia. The song of the Lord Krishna in the flute, this one is just like ambrosia. हरिश्चंद्र बताते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से कहती थी कि हमें वह सौभाग्य आज दुर्लभ हो गया है. Then they say to the Uddhav, such we are missing that fortunate, very good moments or the loveful moments now. We don't have such moments now because the Krishna went to the Madhura. No, in the separation of him, they are languishing in the sorrow. विधि की गति यही है. दिस इज द आवर डेस्टिनी, व्हाट वी कैन डू. लगता है कि भारतन हरिश्चंद्र सूरदास के भ्रमर गीत सार से बहुत कुछ प्रभावित थे. By this what we can understand, Surdas also is a staunch believer of the Lord Krishna. He wrote Bhramar Geet. And our Bharatan Harishchandra also might be impressed and fascinated by his Bhramar Geet. It seems by here because he is also lover of the Lord Krishna. He is also staunch believer of the Lord Krishna. So, Lokaranjan. इसलिए श्री कृष्ण के दूत के रूप में आए उद्धव से गोपियाँ. Then who came as a messenger of the Lord Krishna, उद्धव व्यंगा और वेदना व्यक्त करते हुए कथन करती हैं कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है. Then both the feelings they express with the messenger of Lord Krishna, Buddha, both one is sorrow, the other is satire, both. We say Lord Krishna itself is the God. वे हमारे हृदय में भर गए हैं. Lord Krishna is filled our heart. He is presented in our heart. इसलिए उनके सिवा हमें और कुछ योग या मोक्ष की आवश्यकता नहीं. So henceforth we don't want any more spiritualism or the solution. We no need. These are the words uttered by the Gopiya. That means wives of the Lord Krishna. This is the beautiful summary of the Prem Madhuri poem. Hope you might have understood. Suppose if you are satisfied with my explanation, don't forget to subscribe my channel, click the like button, press the bell icon, share with your friends and relatives till the next upload. Take care of yourself. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind. Allah Hafiz.